Okay, let's start. So last class में we were talking about probability. So probability cover कर रहे थे and we have covered almost maximum type of questions in probability. एक दो टाइप और बचे हैं जो हम देख लेते हैं जो वैरायटी क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है एंड लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो दिखते कॉम्प्लिकेटेड है पर होते सिंपल है दैट विल कवर टुडे. So just for the sake of revision, what is probability? Probability of event is number of favorable outcomes. Total number of outcomes. So now we define the probability. Okay, so let's start with the questions. And this is the first one for the day. From a well shuffled deck of 52 cards, 3 cards are drawn at random, and the cards are replaced as they are drawn. What is the probability that all the 3 cards are of spades? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ देयर इज वन सेंटेंस दैट आई वांट टू हाईलाइट एंड अंडरलाइन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो ऐसा बोला गया था कार्ड्स आर रिप्लेस्ड, कार्ड्स आर मल्टीप्लेस्ड. जो भी कार्ड हम उठाएंगे यहाँ पर द कार्ड दैट वी आर गोइंग टू विथड्रॉ दैट विल बी रिप्लेस्ड. ठीक है, सो दिस चेंजेस द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन देन वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व दिस. Yes, do we have some answers over here? From a well shuffled deck of cards, 3 cards are drawn at random. So random observation, random experiment हमने देखा था last time. वो experiment होते हैं जिसका we don't have any of the predetermined solution. The cards are being replaced as they are drawn. So जैसे हम कार्ड को उठा रहे हैं, we replace them. That basically means the number of cards in deck at any point of time is going to be equal to 52. Which अगर हम we are if we are picking up, we will be replacing that one.
ठीक है, तो 52 रहने वाले हैं. We are supposed to find out what is the probability that all the three cards are on spades. एकदम simple है. Let's talk about the first one. What is the probability that first card is on spade? So how many spades do we have? Can anyone tell me? 13. Very 13 spades. So we have 13 spades and total number of cards is 52. So that is the first one for the first card. Now again second card. Now जो card हमने निकाला था, the card that we have picked up, it is again replaced. उसको हमने replace कर दिया. So the second, I already have this 13 spades with me, and I total number of cards is 52. So again it will be 13 spades out of the 52 cards, and third time also 13 by 50. Can you solve this and tell me what is going to be the probability? Zero point 0.0156. 0.0156. और अगर आप इसको सिंपली करते हैं, it will become 1 by 4, 1 by 4 to 1 by 4, which will be 1 by 16. Answer is 1 by 16 or 0.0156. Anything. Fun one. Simple question है, ज़्यादा कुछ है नहीं. Just thing you need to understand कि replacement के बाद क्या होता है. कल हमने जो दिखा था क्वेश्चन है, that was without replacement, और आज जो हमने देखा that is with replacement. So let's start this one. 1 by 64. Yes, sorry, 1 by 64. Thanks for correcting. Now let's see the next one. Next question कैसा है and how we can solve this one. Yes, this kind of question we have done in the last class also. So try to solve this one. The letters of the word address are placed in a row at random. What is the probability that the two vowels come together? Now they have already given you that there are two vowels in this particular letters. So number of letters we have. We have A, D, D, R, A, S, S. So 7 letters we have, and we are supposed to keep the two vowels, that is A and E. These are your two vowels. These are to be considered as single unit. So if we consider vowels to be single unit, then number of letter will become 6. If we consider the vowel to be single unit, we will have 6 number of letters. Now, my best 6 letter हो गए. So the number of ways in which I can address or I can arrange the 6 letters, it will be 6 factorial. Right? Number of ways arranging 6 letters. 6 factorial. I got 2 different answers. This one. Let's see what is the correct answer. I'm trying to solve it. But 2 by 7. So number of arranging 6 letters, it will be 6 factorial. That's correct. But यहाँ पर हमें ध्यान रखना है that 2 D's they are of the same type and 2 S they are of the same type. So हमने last class में देखा था if the two numbers they are of the same type, we have to divide it by the same factorial. Right? So 2 factorial, 2 factorial. दो बार हम divide करेंगे. Why? Because D is repeated twice. And over here,
as repeated twice. Right, so this has happened. अच्छा, इसके अलावा we also have these two vowels. So last class में हमने देखा था जो vowels से we had the same vowels. Over here we don't have the same vowels. So number of ways of arranging two vowels. Right. So पहले इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? Simply 2 factorial. And since they are not repeating anything, so 2 factorial ही रहेगा. ठीक है. So total number of ways हो जाएंगे हमारे पास. Total number of ways of arranging 6 alphabets, 6 letters. Letters where 2 alphabets are joined together, right? So इसका हो जाएगा हमारे पास 6 factorial by 2 factorial into 2 factorial तो हमने अभी देखा था. Multiplied by 2 factorial हो जाएगा. This is just for the vowels. जो दो vowels हमने एक साथ कंसीडर किए हुए हैं उनकी पोजीशन भी आगे पीछे हो सकती है. Right? So this is what we have as favorable outcome. This becomes your favorable outcome. Now total number of outcomes, total possible outcomes. It becomes, अब हमारे पास 7 letters हैं, so we'll have 7 factorial divided by दो आपस में repeat हो रहे हैं, so 2 factorial divided by 2 factorial. दो बार हो जाएगा. Right, so this will be like this, and now from here you can calculate the probability of the event. So 6 factorial into 2 factorial divided by 2 factorial. ये अच्छा जो denominator है, they will get cancelled with each other. दोनों केस है फेवरेबल और टोटल में डिनोमिनेटर सेम ही है तो वो कैंसिल हो जाएंगे. So you'll be left with 6 factorial into 2 factorial upon 7 factorial, which if you solve you will get 2 by 7. Simply this will be your answer. I got multiple answers in the chat box and you have already said the answer. This is the correct answer. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. थिंग इज योर अप्रोच टू द सॉल्यूशन, इट मैटर्स द मोस्ट कि आप कौन सी अप्रोच से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. Let's move forward and see the next one. Okay, the letters B, G, I, N, and R are rearranged to form a word. Then what is the probability that the word is break? Let's try to solve this one. बहुत simple है. One by 120. Yes, that's correct. It will be 1 by 120. So what we have over here is break. We need to arrange the words into break. So number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes. कितने होंगे? Only one. Why? Because there is only one possibility of having break. ठीक है, बाकी सब में I कभी आगे आ जाएगा, कभी N आगे आ जाएगा. फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएंगे. लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, number of possible outcomes, this will become 5 factorial. क्योंकि हमारे पास 5 अल्फाबेट है तो पांचों को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे, यानी कि 120 हो जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी आपकी सिंपली आ जाएगी 1 by 120. दैट इज सो दीस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी आर सपोज्ड टू डिस्कस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे. सो वर नेक्स्ट टॉपिक is related to set theory. So let's have a little bit of theoretical part first, then we'll try to solve numericals कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं. अच्छा, सेट थ्योरी के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं they are never asked directly. कभी भी उनको डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, उनको हमेशा इनडायरेक्टली पूछा जाता है in the form of some other questions.
बट यू शुड गेट टू नो कि अच्छा ये इस चीज का पार्ट है और यहाँ से इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. लेट्स स्टार्ट विद सेट थ्योरी. we'll also cover the entire Venn diagrams over here. जितने Venn diagram होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. The first thing that we have already discussed, वैसे तो हमने डिस्कस किया हुआ है, what is set. So let's talk about them. The set is the collection of distinct objects. Collection of distinct objects, all the different objects. It is usually denoted by this kind of curly braces. Okay. We can have different types of sets. For example, let's consider one like the set of odd numbers. Set of odd numbers. So it will be simply like 1, 3, 5, 7, and so on. Okay. And then we can also have. यहाँ पर मैं एक और चीज यहीं पे explain कर देता हूँ. We have set of positive odd numbers less than, let's say, 10. 10 से कम. This will become 1, 3, 5, 7, 9. राइट. इतने ही हमारे पास. यहाँ पर मेरे पास दो टाइप के सेट बने. जो पहला सेट है दैट इज योर इनफाइनाइट सेट, where we have infinite numbers. The second is a finite set जहाँ पर हमारे पास finite numbers हैं. तो जितने भी मेरे पास नंबर हैं सेट के अंदर they all are predefined. ठीक है. So ये finite set, infinite set, it gets clear over here. There is one more thing that we'll talk is let's talk about a condition. A condition, a specific condition जहाँ पर we'll define a set in such a way that set consists of all the elements x such that x minus, let's say, 2 is equals to 10 and x is less than 4. So x की वैल्यू 4 से भी कम है, लेकिन उसमें से अगर मैं -2 करूंगा तो वो 10 हो जाएगा. तो 4 से कम हमारे पास 3, 2, 1, 0, 1, -1 ये सब नंबर आएंगे. पर उनमें से मैं कोई भी एक नंबर ले लूं और उसमें से अगर मैं -2 करता हूं, so I'm not going to get 10 anyway. So ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं. Let's try to understand this thing. पहली इक्वेशन बोल रही है x minus 2 is 10. सेकंड इक्वेशन बोल रही है x less than x is less than 4. तो ऐसा कोई भी नंबर एक्चुअल में पॉसिबल है ही नहीं जहाँ पर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी. So this entire set will have no elements. Right? No elements. तो इसमें या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई there is zero element, or we call it as like 5. 5 is known as your null set. It is known as your null set. Null set is basically something which does not have any of the elements. अगर कोई भी element नहीं है. कभी-कभी हम इसको empty set भी बोलते हैं कि भाई ये खाली set है, इसके अंदर कुछ नहीं है. ठीक. अच्छा, I have defined. We can define this set in two forms. The first is this one, set of odd numbers, जहाँ पर ये directly मैंने number लिख दिया. Second form is this one, जहाँ पर मैंने condition लिखी हुई है. Rather than numbers, I have written the conditions. Right. So इस दो form में हम sets को define कर सकते हैं. Now let's talk about how these sets are usually represented using Venn diagrams. So we'll talk about Venn diagrams in detail. So there was a guy, mathematician, जिन्होंने सोचा कि जो भी मेरे पास random data है, discrete data है, why don't we represent this data in the form of a diagram? And उन्हीं के नाम से ये चीज बन गई थी Venn diagram. So let's talk about them one by one कि कौन-कौन से diagram होते हैं और क्या-क्या चीजें वो निकाल करते हैं. So most of the things you might be knowing it, but just for the brush up of the basics, I am covering this part. So let's say there is a set A which consists of one kind of elements, and then there is set B which consists of another kind of elements. So ये होते हैं मेरे पास A and B. And then there is a U. What is U? Universal set. Very good. I'll define U over here, which is known as universal set. Universal set basically consists of all the elements of the universe. All elements of the universe. मैंने यहाँ पर U define कर दिया universal set. ठीक है.
So what this universal set will basically mean is it will consist of all the elements of A, will consist of all the elements of B, and apart from this, rest of the elements will also be a part of this universal set. So if I want to represent universal set, और मुझे universal set represent करना भी है, so it will consist of all the parts of the shaded element जो मैंने यहाँ पर बनाया. So this will represent your U, that is universal set. ठीक, first. Now let's talk about few more. So let's draw this sets. Let's say I have two sets A and B over here. So first of all, let's define what is set A. So set A will consist of all the elements which are in the A and which are also common between A and B. So common element they will also be included. Similarly for B, which are in B and which are also common between A and B. So this will also be a part of B. ठीक है, अभी आप सोच रहे हो सर ये तो बहुत सिंपल चीज है, आप क्यों बता रहे हो. The next we are going to solve few questions and उस टाइम पे हम देखेंगे कि भाई क्यों ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ से ये चीजें आती हैं. ठीक है, so let's see the next part. जो हमें operations, boolean operations इसको हम बोलते हैं. So how boolean operations are done using this Venn diagram. So let's say I have two sets A and B defined inside this universe. So if I want to consider all the elements, I want to consider all the elements of set A, set B, and the elements which are common in between them. ठीक है, without अच्छा इसमें जो दोनों के बीच में जो common है, they are being considered only once. इसको हम बोलते हैं A, U, B or union. This operation is known as union of set. ठीक है, so for example, if I have 2, 3, 5 as A and 3, 5, 6 as B, then this is A and this is B, then A union B will be 2, 3, 5, 6. जो एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहे हैं, they will be written only once because वो एक ही बार है. ठीक है, तो we are considered it once. So this is union. Let's see the next operation. So let's say I have two sets A and B again. A, B, and I'm only interested in finding out what is common between A and B. चीजें common है इन दोनों के बीच में, the middle portion. ठीक है, so this is represented as A intersection B. Right, इसको हम intersection बोलते हैं. Intersection is a thing which is common between A and B. Then we'll have certain more operations like this one. So again, I'll consider two sets. So there is A, there is B. Right. So if I want to represent, let's say A minus B, I'll consider all the elements of A and I'll remove the elements of A which are there in B. Right. So B वाला जितना ही portion जो बीच में common आ रहा है उसको हम यहाँ पर हटा दें. And that's A minus B. Similarly, you can obtain B minus A also. So वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर ये कैसा होगा, but you can gather it. Right. And last one. Right. So let's say I have a single set A. So we can define another set which is known as A dash or represented as complement of A. So complement of A basically consists of all the elements which are there in the universe but which are not a part of A. Right? So elements which are there in the universe but which are not a part of like this. So A won't be there but rest all the things will be there. अच्छा यहाँ पर एक और चीज आ जाती है that we'll discuss. Simple rule that we are going to use a lot, which is known as De Morgan's law. De Morgan's law is वैसे तो बहुत सारे laws हैं इनके जो इन्होंने दिए थे related to Boolean operations,
but the one we are interested in is to connect the two functions of sets, that it connects the union with intersection, connects the union with intersection. So union of sets with the intersection of sets. तो कैसे ये दिया जाता है? It is represented as number of element in A union B will be equal to the number of element in A plus number of element in B माइनस, अब देखो जब हम नंबर ऑफ ए ले रहे हैं और नंबर ऑफ बी ले रहे हैं, सो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सो इट विल गेट मोर क्लियर। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन इज आई नीड टू फाइंड आउट कि जब हम यूनियन करते हैं दोनों का, सो एक सेट ए है मेरे पास और दूसरा सेट बी है, ठीक है, ए और बी, और इन दोनों का हम यूनियन करने की कोशिश करें, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? so, एक तो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और दूसरा हम कर दे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, सो हमने बी वाले भी यहाँ पर ऐड कर दिए। बट व्हाइल डूइंग सो जो बीच वाला जो पोर्शन है इट इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस, आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस लाइन जा रही है, सो इट इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस, तो उसको हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और वही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ये दो बार रिपीट हो गया था हमसे, तो वो हम एक बार माइनस कर देते हैं एंड दिस इज हाउ वी कनेक्ट दिस यूनियन विद इंटरसेक्शन, राइट। सो ये अगर मुझे कभी भी यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में रिलेशन निकालना हो तो इसलिए ये इक्वेशन यूज करते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है गेट के अंदर, नॉट इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर नहीं पूछा गया, बट बाकी अगर आप ब्रांचेस की बात करो तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, राइट, कि नंबर ऑफ सो पीपल दे प्ले हॉकी, सम नंबर ऑफ सो पीपल दे प्ले क्रिकेट, सम ऑफ दोस पीपल दोस हु प्ले बोथ, ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाते हैं दैट नंबर ऑफ प्लेयर्स हु डू नॉट प्ले एनीथिंग और ऐसे करके क्वेश्चन बनाते हैं। Let's try to see some of the theories over here. Just give me 1 minute and share my screen once again. Let's try to understand कि हम elements कैसे लिखते हैं, ठीक है। So this is a Venn diagram. This is a Venn diagram with 3 sets or 3 attributes. We try to solve or understand this one. Three attributes. So what are these attributes? These are the 3 attributes are basically 3 sets A, B, and C. Now we'll try to define this different elements of this sets. Let's say I'll start with NA, number of elements in A. So how do we define the number of elements in A? So A के लिए हमारे पास ये तो आ जाएगा, प्लस ये भी आएगा, प्लस ये भी आएगा, प्लस ये भी आएगा. The 4 elements which are getting added up, that is A plus D plus E plus G जो सेंटर है, ये चारों जब ऐड होंगे then I'll get A. Right. Similarly, you can find out what is going to be B and C. So number of elements in B will be equal to B plus F plus E plus G. The number of elements in C will be equal to C plus D plus F plus G. Right. अब यहाँ से आपको कोई पूछता है कि भाई okay, which is the element which is common to all the sets? That is only one element which is common to all the sets at the center G. पहला जो टाइप यहाँ पर बनता है क्वेश्चन, like what are the things or what are the number of elements belonging to only one set? One set. ये क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम के अंदर? नंबर ऑफ प्लेयर्स दे प्ले आइदर हॉकी और ओनली क्रिकेट, ओनली वन गेम, ऐसा जब पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिर्फ ए करने वाला सिर्फ एक ए है, सिर्फ बी सेट फॉलो करने वाला सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी, और सिर्फ सी फॉलो करने वाले सी। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे आर बिलोंगिंग टू वन सेट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास 2 एलिमेंट आते हैं,
that is E plus G. Okay. Number of elements in A intersection C will be G and D, and number of elements A or B intersection C. ठीक तो आ जाते हैं G and F. यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि भाई एक एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, that is A intersection B intersection C. Right. अच्छा यहाँ से हम और भी चीज बोल सकते हैं, like if I want to find out the elements A minus B, yes, what will be the elements? A and D. Very good. It will be A and B. Similarly, if you find out B minus C, B and D. you will consider B entirely, and जो C वाले एलिमेंट थे उनको आप हटा दोगे, so you'll be left with B and D. दो ही चीजें हमारे पास बची। ठीक है, and what will be A minus C? A and D. A and E. A and D. Very good. अच्छा, यहाँ पर आपको समझना है that A minus C is A and E. What is C minus C? C and F. C and F. So ये चीज आपको समझनी है that A minus E not equal to C minus A. So सेट के लिए ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये यहाँ पर एप्लीकेबल है। Okay, now let's move forward and try to see some of the good things, some good questions. So there is a Venn diagram given over here on the screen. Yes. And I'll be asking you some of the questions. Before that, let's give some of the information related to this Venn diagram. Let's say X, set of X is the even numbers. X represents the even numbers. The set Y, it represents the odd numbers. And the set Z, it represents the prime numbers. ठीक है, तो हमारे पास तीन सेट दिए हुए हैं x, y, z, where x represents the even number, y represents the odd number, and z represents the prime number. I'll be asking you some questions. Try to answer them. First one is the number which are even numbers which are not prime. That's correct. So even हमारे पास सेट कौन सा है, x, and prime set है हमारे पास z. So it will be x minus z. अब x में अगर आप देखने जाओ, we had 21 and 3 and 0 0. अब इसमें से z हटा दो, 3 चला जाता है, so we will be left with 21. Only x part आएगा, z part नहीं आएगा. Let's the next part. The odd numbers which are prime. Y plus Z. Yes. What is odd numbers? Odd numbers is y, set y, which are prime.
which is also prime, तो z. So हमें दोनों का common निकालना है. This we need to find out y intersection z. So y intersection z basically means the thing which is common between y and z. So 0 आ रहा है और 14 आ रहा है. So 14 plus 0 will be 14. So 14 will be the correct answer. ये वाला हिस्सा आएगा y and z का. This will be the answer. Let's move on to the next one. So the numbers which are present in sets but are not prime. वो नंबर जो हमारे सेट में है बट वो प्राइम नहीं है. How many numbers will be there? Yes. So how we'll find this one? Numbers which are present in sets जो हमारे पास है but they are not prime, जो prime नहीं है. So first set मेरे पास कौन सा है? X. So X के अंदर मेरे पास जितने भी नंबर है उसमें से प्राइम नहीं है, यानी कि Z वाले माइनस कर देंगे. राइट, ये एक हो जाएगा. प्लस दूसरा सेट मेरे पास Y है लेकिन प्राइम नहीं है, तो Y माइनस Z हो जाएगा. So X माइनस Z, Y माइनस Z. X माइनस Z अगर आप करते हो so you'll be left with only 21. ठीक है, बाकी सब चले जाएंगे यहाँ पर. So you'll be left with 21. एंड दूसरा अगर आप y माइनस जेड करते हो सो यहाँ पर जो भी है नीचे वाले सब चले जाएंगे. सो आपके सिर्फ 10 बचेगा. इट्स 10 आ जाएगा. 21 plus 10 will be 31. दिस विल बी योर आंसर. सर यस, इसको ऐसे नहीं कर सकते x यूनियन y माइनस z. x यूनियन y माइनस जेड, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वो भी सही है. ओके लेट्स कंसीडर द नेक्स्ट पार्ट. You have to find out the total odd numbers. So you have to basically find out the entire Z Y. Yes. So this will be a simple answer. Plus Z मुझे सिर्फ odd numbers निकालने. So odd is Y set. Y set के अंदर मेरे पास 4 एलिमेंट आएंगे, दो तो जीरो ही है. एक बचेगा 14 और एक बचेगा 10. That will become 20. Right. Simply ये आंसर आएगा मेरे पास. So this is how we see the Venn diagrams. अच्छा, ऐसे simple question नहीं आएंगे obviously. This is it. So यहाँ पर इतने simple question नहीं आएंगे. But this is just to understand this Venn diagram, how they look like and how do we study Venn diagrams. Let's see another part. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर. Let's for this question let us assume that there is a percentage of car, bike, scooter owners is given to you. Right. अच्छा, यहाँ पर this particular part. Right. None percentage. So that 10% of the people they do not have anything, and we'll assume one more thing, that the total number of houses for the locality जहाँ पर ये study की गई है, these are 400. Now we'll try to answer few questions like
The numbers of houses which have bikes only. $88. Very good. That's correct. How do we solve this one? तो अगर आप bike only की बात करो, so only 22% is there. because bike होगी, so 22 by 100, and what we have is total number of houses is 400. 22 into 4 हो जाएगा, जो 88 हो जाएगा. That's correct answer. Let's do the next one. Number of houses which have exactly 2 vehicles. के पास exactly 2 vehicle है. $104. That's correct. Very good. तो कौन कौन से हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे? So we will be considering first of all this 11% जिनके पास बाइक है और कार है, 2 व्हीकल है. Then we will be considering this 10% जिनके पास कार है और स्कूटर है, and this 5%. ये तीन चीजें कंसीडर की जाएंगी. सेंटर वाला कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज वहां पर हो जाएंगे 3 व्हीकल्स, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा. So 2 व्हीकल्स वाले 3 हो जाएंगे. अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो, so you'll get 11 plus 10 यानी कि 21 plus 5 26. So 26% है. So 26 by 100 400 आपको करना है, and this will give you the right answer, that is 1 not. Let's the third part. The people or number of houses which have cars only. $40. 40 people. 10% दिया हुआ है, 10% of we are supposed to find out 400. So 10% of 400 will be 40. Now fourth one, those who have only one vehicle. Only one vehicle. Four. Only one, right? So आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि या तो जिसके पास सिर्फ कार हो, या तो सिर्फ बाइक हो, या तो सिर्फ स्कूटर हो. $256. What we'll have is 10% यहाँ पर आ जाएगा, उनके पास सिर्फ कार है, 22% बाइक है और 32% स्कूटर. So 32 and 22 it will become 54 and 10 यानी कि 64. 64% of 400 you are supposed to find out, which will become 256. 256. So now we solve this kind of question. Let's see one more question like this. Okay, try to study this question and then we'll see what is the correct answer. Q